ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज में आप सभी का स्वागत है बच्चों। जो बच्चे घर बैठे ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, और कोई भी आपका स्किल आया हुआ है, जैसे एसएससी का भी आने वाला है, या DSSB का, DDA का, ITBP का, BSF का, CRPF का, CSF का, दिल्ली पुलिस का, कोई भी एग्ज़ाम है आपका भी, जैसे मतलब जिसमें स्टेनो मांगी हुई है, 80 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, 100 की स्पीड है, 120 की है, तो जैसे मतलब भी इसमें कंप्लीट कोर्स है, बेसिक से लेके 120 तक के सभी की सभी स्पीडें इसमें अवेलेबल हैं। तो वेबसाइट है ज्योति स्टेनो टाइपिंग कॉलेज.com। इस वेबसाइट पे आप जाइए। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो एडमिशन फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली का एक बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए खुद से, और यूज़र नेम पासवर्ड खुद से बनाइए। उसके बाद जो है स्टेनो कोर्स में जाइए। इंग्लिश स्टेनो बेसिक टू गवर्नमेंट जॉब के नाम से कोर्स है। उस कोर्स दो तरह से अवेलेबल है, ईयरली और मंथली, दोनों तरह से। वो जौन सा जैसे आपका दिल करता है उस तरह से लीजिए। और उसमें जो है बेसिक पिटमैन पॉकेट बुक, RPC पिटमैन पॉकेट बुक के RPC पिटमैन कंप्लीट पॉकेट बुक के नाम से कोर्स है, उसको पहले पढ़िए। इसकी 92 वीडियोज़ हैं। उसके बाद उसमें जनरल डिक्टेशन है, जो डॉक्टर जी WEBSTIE द्वारा जो लिखी गई डिक्टेशंस हैं उसमें बोली गई हैं, उसके सॉफ्टवेयर हैं, उसमें आप टाइप कर सकते हैं। SSC स्पेशल 100 डिक्टेशन है, और उसके अलावा जो कैलाश चंद्रा डिक्टेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये 76 तक उसमें हो रखी हैं, और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ कैलाश चंद्रा डिक्टेशन नंबर 77। इसको भी आप वहाँ पर वेबसाइट पर जा कर के माई कोर्सेज में KC फोल्डर में जा कर के टाइप कर सकते हैं और अपनी एक्यूरेसी को जान सकते हैं। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कैलाश चंद्रा डिक्टेशन नंबर 77। डिक्टेशन स्टार्ट आफ्टर 5 सेकेंड। Mr. Vice Chairman, sir, the compulsory deposit scheme which was introduced in 1974 was partially withdrawn in 2007 for the lower income group, and it has continued for income groups having an income of rupees 5 lakh and above per year. Sir, the objective of the bill is laudable as being anti-inflationary and to save what is called conspicuous consumption. But is the government really serious about the whole matter? Sir, it has been reported in the press that the government wants to impound 50% of the dearness allowance due to the central government employees. Why has this dearness allowance become due? It became due from the month of March and May this year because the average 12 monthly index has gone up to 453. All this is because the government's policy about controlling the prices has been a complete failure. Without controlling the price line, the government will not be able to achieve anything. It will help neither the country nor the poorer sections of the people. I think this government has not decided what should be its price policy. The price policy has to be integrated with the policy relating to incomes and wages, and unless this policy is settled by the government, it is no use having only the compulsory deposit scheme against those who are regular monthly salaried workers or those of higher income groups. But even though they may be of higher income groups, with the high escalation of costs and the index going up so steeply, their purchasing power is already eroded. Therefore, I would like to know from the government what steps it is going to take for the stabilization of cost of living, which has to be the main objective of any economic policy.
Sir, stabilization of cost of living has been given a go by. Nothing has been done to control the prices. On the other hand, black market and a parallel economy are flourishing. Prices of ordinary vegetables like the cauliflower are rupees 25 per kilo and tomatoes are selling at rupees 28 per kilo. Everything has become so costly. Still, the government wants to attack those people who are only wage earners and whose incomes are fixed. There is a fear that with the financial accounting year coming to a close, the bonus question will come up, and this government, which has no other policy except to fleece, will come up, and this government, which has no other policy except to fleece the workers and its employees, will come forward with a sort of an ordinance or a bill by which they will deprive the workers of their bonus, or they may ask them to deposit it with the government. As I said earlier, this government must decide about its policy. The government must come out with decision to have a national pay policy for all the state governments, and therefore it is very essential that a national pay commission should be appointed to decide the policy so that the working classes and employees can cooperate in the economic development of the country. I find that the government is not taking any steps to prevent black marketing or to run the public distribution system effectively. Hardly 4 lakh public distribution shops have been opened as against the total population and the working class population. It is a very meager number. Therefore, the worst affected persons due to the rising prices are the poor people, the toiling masses, and the entire working class. Therefore, sir, my submission is that instead of continuing such schemes and having only piecemeal legislations, will the government decide a price policy for stabilization of the cost of living, which is very essential to have more economic development and prosperity. If they really want the employees to be partners in industry, the government must accept in principle that the fruits of prosperity must be shared by the working classes, and therefore the time has come when participation of labor in management has got great importance. Otherwise, we are caught in such a vicious circle that no progress can be made. What is happening now is the rich are becoming richer and all the black marketers are having a field day. We have heard of the prices of land in Bombay and other things, and how everything is being exploited by the big businessmen, smugglers, and others who are having a field day in the country. Therefore, I am opposed to this type of ordinances. Sir, the government has adopted a novel method for solving the economic problems of our country. When the budget was presented, they did not spell out the terms. In fact, a bill with the necessary fiscal measures should have been thought of when the budget was presented, but in the budget session nothing was done. Recently, the prices of petrol and other petroleum products were increased without any indication in the budget. अब इससे आगे स्पीड को बढ़ा दिया गया है. अगर आपको 80 की स्पीड से लिखनी है तो एसएससी की जो 100 डिक्टेशन है वो लिखिए आप. अब इसमें जो स्पीड रहेगी वो 100 प्लस रहेगी भी, जिससे जो है अब जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप 100 का जो पेपर है वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ.
तो इसीलिए जो कैलाश चंद्रा की जो डिक्टेशंस है ये 100+ अब ये आगे की रहेंगी। तो जो भी बच्चा प्रैक्टिस करे अब ढंग से करे। इस वेबसाइट पे इस डिक्टेशन को लगा दिया गया है। वेबसाइट का नाम है jyoti-stenotypingcollege.com। वहाँ पर जा कर के केसी डिक्टेशन नंबर 77 पे क्लिक करें। ऊपर वीडियो है, ऑडियो वीडियो है, उसके नीचे इसके PDF है, उससे नीचे ट्रांसक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है। वहाँ जा कर के इसको आप टाइप करोगे तो आपका जो स्पेलिंग एरर है, टाइपिंग एरर है, आउटलाइन एरर है, वो आपको निकाल के दिखा दिया जाएगा, जिससे आप उस पर काम कर सकते हो और अपनी एक्यूरेसी को अच्छा कर सकते हो। इस क्लास के अंदर इतना ही बच्चों। नमस्कार बच्चों।